students, how are you all? I am your English teacher Monika Angrish. What are we going to study today? Today we are going to study adjectives. Now what are adjectives? So you people have studied adjectives when you were in 4th class. Now the adjectives we are going to study a little deeply, you know, और गहराई में जाएंगे. चलिए. So adjectives are the describing words जो किसी को describe करता है, उसे बताता है उसके बारे में कि वो कैसा है. Adjectives are describing words that tell us more about person, animal, place and thing. कि वो जगह कैसी है, वो इंसान कैसा है, ठीक है, और वो जानवर कैसा है, ठीक है. तो adjectives क्या होते हैं? जो उस चीज को describe करें. For example, it was an interesting movie. अब यहाँ पर क्या है? मूवी देखी आपने और वो क्या थी? इंटरेस्टिंग थी. तो इंटरेस्टिंग क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव हुआ. फादर बॉट 4 चॉकलेट्स. फादर कितनी चॉकलेट्स लाए? 4 चॉकलेट्स. तो 4 क्या हुआ यहाँ पर? उसने क्या डिस्क्राइब किया? चॉकलेट्स का नंबर. तो कितनी चॉकलेट्स हैं? 4. सो 4 मीन्स एडजेक्टिव. 4 is an adjective out here. Neha is wearing a pink dress. Now when I am saying Neha is wearing a pink dress, तो I am describing her dress. और dress कौन से कलर की है? Pink कलर की. So what is an adjective here? Pink. Fine. चलिए. Position of adjectives. Adjectives की position. Adjectives are usually placed before the nouns they describe. ज़्यादातर adjectives को कहाँ पर place किया जाता है? Nouns से पहले. Before noun. Adjectives are placed before nouns. ठीक है. Adjectives हमेशा noun से पहले place होते हैं. Sometimes the adjective can be placed after noun also. कई बार वो noun के बाद भी होते हैं place. ठीक है. So for example, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, they have started with the exercise. Okay, he is an old man. ठीक है. अगर मैंने sentence बोला he is an old man. He is a old man. ठीक है. ओल्ड मैन. तो यहाँ एडजेक्टिव कहाँ आया? मैन से पहले. ठीक है. लेकिन अगर मैं लिखूं द मैन इज ओल्ड, यहाँ क्या आ रहा है? नाउन के बाद आ रहा है. सो दोनों तरीके से ये यूज हो सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज A. Exercise A says underline the adjectives and circle the nouns they describe. अब हमने क्या करना है? अंडरलाइन किसे करना है? अंडरलाइन तो करेंगे हम एडजेक्टिव्स को और सर्कल किसे करेंगे? नाउन को. फाइन. सर्कल किसे करेंगे हम? नाउन को. राइट. द वुमेन इज हैप्पी टू गेट बैक द पर्स. अब इसमें वुमेन क्या है? वुमेन इज अ नाउन. तो वुमेन को क्या करेंगे हम? सर्कल. वुमेन. और अंडरलाइन किसे करेंगे? एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं? उसकी हैप्पीनेस. तो हैप्पी को अंडरलाइन करेंगे, वुमेन को सर्कल करेंगे. फाइन. नेक्स्ट इज द मैन इज कैरिंग अ हैवी बॉक्स. हैवी इज एन एडजेक्टिव. हैवी क्या है? एडजेक्टिव. और बॉक्स क्या है? नाउन. ठीक है. नाउ द थर्ड वन सेज द मैन इज वॉकिंग विद ब्राउन डॉग. Now brown is an adjective. Dog is a noun. Fine. Next is many guests were invited on the occasion. Many क्या है? Many बहुत सारे. तो वो क्या हुआ? Adjective. और guests क्या हुए? वो हुए noun. 5 girls were selected for the play.
5 क्या हुआ? It is telling the number, so it means it's an adjective. और girls क्या है? वो है noun. ठीक है? The same way you will do the other questions also. चलिए, now we move on to the next topic, that is the types of adjectives. There are types of adjectives. अब types of adjectives क्या होता है? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of adjectives. अब वो क्या होते हैं types of adjectives देखते हैं. ठीक है? First is adjectives of quality. Adjectives of quality. 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 Adjectives of quality. Then is adjectives of quantity. Adjectives of quantity. Quantity. Then is adjectives of numbers. Numbers. Then is adjectives, demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives. Then is interrogative adjectives. Interrogative adjectives. Then your is last one is possessive adjective. Possessive adjective. ठीक है? So these are the 6 type of adjectives. Now adjectives of quality, what is it? This is a story book. It tells us about the kind of a book. अब ये क्या हुआ? क्वालिटी बता रहा है किसी की, ये एडजेक्टिव. हमने कहा दिस इज अ स्टोरी बुक, तो वो कहता है कि ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ बुक. किसी बुक के बारे में बोल रहा है. मीतू इज अ गुड डांसर. इट इज टेलिंग अस अबाउट द काइंड ऑफ अ डांसर इट इज. शी इज अ गुड डांसर और अ बैड डांसर. These words story, good are adjectives. ये क्या है? Adjectives हैं, क्योंकि वो उसको describe कर रहे हैं. Since they tell us about the book and the dancer respectively. Story tells us about the kind of book. कैसी book है वो? कि वो story book है या कोई musical instruments के बारे में book है या फिर science की book है. Fine. And good tells us about the kind of a dancer Neetu is. She is good, है ना? Good and story are adjectives of quality. उनकी quality बता रहे हैं. ठीक है? So adjectives of quality is an adjective that tells us about the kind or nature of a person. It tells us about the kind quality बताते हैं. Kind. It tells us about the kind or nature of a person. Nature of a person. ठीक है? It tells us about the kind and nature of the person. Suppose if I am saying small, big, large, तो ये क्या है? These are the adjectives of quality. Now there is an exercise B. Underline the adjectives of quality in the following sentences. Exercise B करेंगे. Exercise B. So first sentence is the rose is a beautiful flower. Rose क्या है? एक beautiful flower. तो इसमें underline किसे करेंगे आप? आप underline करेंगे beautiful को. वो उसकी quality बता रहे हैं. वो उसकी quality बता रहे हैं. Number 2. Number 2 says Mumbai is a big city. तो यहाँ क्या quality है मुंबई की? कि वो बहुत बड़ी है. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? Big. Mumbai is a big city. Third is Ashoka was a great ruler. अशोका क्या है? एक बहुत बड़ा ruler है. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? Great.
नंबर फोर क्या कह रहा है? ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड. जो ऑनेस्ट लोग होते हैं दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड. तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट क्या है उसकी क्वालिटी. ठीक है. The same way you will do the whole exercise and find out the qualities. Suppose the other one is the children are sweet and intelligent. इसमें क्या है? Adjectives of quality, sweet and intelligent. ठीक है? So just finish up this exercise with the help of teachers out there. So let's move to the next exercise. It is exercise C. Exercise C says fill in the blanks with adjectives of qualities from the given box. यहाँ जो बॉक्स है उसमें adjectives of qualities दिए हुए हैं और जो नीचे फिलअप्स हैं उनमें आपने वो वर्ड ढूंढना है जो सेंटेंस के साथ जाता है जो कि इस बॉक्स में लिखा है उधर से. Suppose the first sentence says we did not go to school yesterday since it was a dash day. तो यहाँ क्या आएगा? ऊपर से मैं देखूं तो क्या है? Rainy day. Rainy day. It was a rainy day. तो फर्स्ट का आप आंसर लिखेंगे rainy. It was a rainy day. Now the second one, the woodcutter was an dash man. आपने स्टोरी सुनी है वुडकटर वाली? नहीं सुनी तो मैम को बताना. मैम आपको वुडकटर और फेरी वाली स्टोरी सुनाएगी. वो बहुत अच्छी स्टोरी है. तो आपको पता चल जाएगा इस सेंटेंस का मतलब क्या है. The woodcutter was a honest man. Number 3 says Vaibhav is a dash child. Vaibhav is a naughty child. Naughty child. Now number 4 says the baby had chubby cheeks. Baby के कैसे cheeks थे? Chubby cheeks थे. तो आप क्या लिखेंगे? Chubby. The baby had a chubby cheeks. Fifth is street food is unhealthy. क्या होता है street food? Unhealthy. ठीक है. This way you will finish this exercise also. The next is Neetu draws well. She is very creative. The lady was poor but happy. The beautiful princess married the handsome prince. So you have to write the adjectives of qualities in these fill-ups. Now we will study adjectives of quantity. What are the adjectives of quantity? Adjectives of quantity is an adjective that tells us about the quantity of a thing. जो किसी चीज की क्वांटिटी यानी कि कितनी चीज है उसमें वो बताता है. उसको हमें क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जैसे give me some of this dish or something, or give like enough, much, this is enough for me, I don't want more, है ना? ऐसे बोलते हैं. तो क्वांटिटी बता रहे हैं ना, some, enough, much. So it tells us about the quantity of a thing. Quantity of a thing. Thing. Like some, much, more. ठीक है? तो it tells us about the quantity of a thing. For example, the teacher gave me some homework for Sunday. Now some here is the quantity. It have enough time to complete the work. I have enough time to complete the work. So enough here is the quantity. The same way adjectives of number. Now what is an adjectives of number? It is an adjective that tells us about the number of a person. जो हमें number बताता है. Number of a person. How many? How many are there? 1, 2, many. कितने? ठीक है? 1, 2 और many. How many? How many of them are there? ठीक है? So all the students were present at the event. तो यहाँ all क्या है? All is telling about the numbers. They will return after 2 weeks. So 2 is here a number.
So this is an adjective of a number. So adjective of a number is an adjective that tells us about the number, person, things or animals. कितने नंबर, कितनी चीजें, ठीक है? Now more about adjectives of number and adjectives and quantities. Adjectives like second, fourth, fifth are also adjectives of number. जब हम लिखते हैं second, fourth, fifth, ये भी क्या होते हैं? ये भी adjectives होते हैं numbers के, right? I have enough work for the day. Enough, enough क्या है? वो भी इसका एक example है number का. In sentence, enough tells us how many, tells us how much work. So it is an adjective of quantity. कितना काम किया है. और अगर मैं कहूँ enough, I have read enough stories over the weekend. Enough tells us how many stories I have read. So it is an adjective of number. Here are some more examples. People want to meet you. Some people want to meet you. तो यहाँ क्या है? Some क्या है? It is the adjective of number. Meena wanted some money. तो यहाँ क्या है? Some किसके लिए यूज हो रहा है? क्वांटिटी के लिए. Some मतलब थोड़ा सा यहाँ पर. तो ये क्या है? Adjective of quantity. Let us learn about some adjectives of quantity and number which convey the same idea. Little and few. अब दोनों का मतलब एक है. Little भी थोड़ा, few भी थोड़ा, है ना? Both little and few convey the same idea, but little is an adjective of quantity. Little क्या है? वो quantity का adjective है. Whereas few is an adjective of number. और few क्या होता है? वो number का adjective होता है. Little is used with uncountable nouns. अब यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो little है वो use होता है uncountable nouns के साथ, जो count नहीं किए जा सकते. और few जो होता है वो किसके साथ यूज होता है? वो होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज. तो अब आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या यूज होगा, लिटिल कहाँ यूज होगा और few कहाँ यूज होगा, ठीक है? So the same way you will do the exercise D. For this, fill in the blanks with the correct words. इसमें आपने क्या यूज करना है? Correct words यूज करना है. Exercise D. Exercise D में कहता है For this you have to go through dash pen. A few लिखा है ब्रैकेट में या a little लिखा है. तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा a little. A little. A little pen. I want dash oil. Few oil or little oil? Little oil. Little oil. Little oil. I have to dash homework for today. I have too much homework. Too many homework नहीं होगा. Too much. Too much. Much homework. We need dash more hours to complete the work. Few. Few more hours. A few. Few more hours. ठीक है? The baby is dash happier now. The baby is much happier now. ठीक है? Now exercise E says underline the adjectives of quantity and circle the adjectives of number in the following sentences. अब आपने underline करना है और circle करना है. Manish goes to his art class 5 days a week. So यहाँ क्या है? Adjectives of quantity को क्या करना है हमें? Circle. तो 5 क्या है? 5 is adjective of quantity. तो 5 को क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे, नहीं अंडरलाइन करेंगे, सॉरी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हमने अंडरलाइन, अब ये लिख लेना. देखो मैं फिर कंफ्यूज हो गई ना. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्या करेंगे हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को करेंगे अंडरलाइन. ओके. एडजेक्टिव ऑफ नंबर को क्या करेंगे हम? उसको करेंगे हम सर्कल. ठीक है? अब ये भूलूंगी नहीं मैं, ये तो then I'll get confused. ये तो मैं भी गलत बता दूंगी आपको. Manish go to his art class 5 days a week. 5 is a number, so 5 को क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे. ठीक है? Many students were absent yesterday. Many यानी बहुत सारे. तो many क्या है? Again it is telling about the number. So ये क्या हुआ? सर्कल होगा. ठीक है? Next हम करते हैं. Please give me some water. I am thirsty. अब जो सम बोला है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. वाटर, उसकी क्वांटिटी बताइए कि थोड़ा पानी. तो इसको सम को क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे. हाउ मच सॉल्ट शुड आई पुट इन द सूप?
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मच आ रहे हैं तो क्या होगा, वो अंडरलाइन होगा क्योंकि वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। See, there is a little food in the kitchen. Little क्या होगा, अंडरलाइन होगा। All the birds return to their nest in the evening. All क्या होगा, circle, क्योंकि it is telling you about the number. Fine. This way you finish up these exercise. Take help of your cats over there. और जहाँ प्रॉब्लम आती है, please ask questions. Now we'll come over to demonstrative. What is a demonstrative adjective? Demonstrate से आपको समझ आ रहा है कोई चीज को demonstrate करना. Is an adjective which is used to point out naming words. जो point out करता है naming words. This, that, these, those, ये होता है. It is which point out naming words like this, that, those. ठीक है? So, for example, this bike is Rahul's. So it tells us which bike. I can see that mango tree. It tells us which mango tree. Which. ठीक है? तो that और this, those. ये क्या हो गए आपके? These are demonstrative adjectives. A demonstrative this and these are used to point out persons. So एक हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. This and these are used to point out person or things which are near, जो पास होती हैं. That and those are used to point out persons or things that are far away, जो दूर होते हैं. That and this are used with singular nouns. Those and these are used with plural nouns. तो ये एक बार आप अपने cats के साथ रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है? A demonstrative adjective is usually placed before the noun it qualifies. This book is mine. तो this is a demonstrative noun. ये क्या होता है? Demonstrate करना. तो ये जो होता है ये हमेशा पहले place होगा noun से, ठीक है? And let's do the exercise F. Underline the demonstrative adjectives. It's very easy. Who gave you this book? Now what is a exercise F? फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन क्या है? Who gave you this book? तो क्या हुआ? This को क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? नंबर 2 says such a fantastic match it was. तो यहाँ क्या आएगा? Such is a demonstrative noun. Now the number 3 says Komal lives in that house. तो that क्या है यहाँ पर? Demonstrative. ठीक है, ऐसे ही you will finish up this exercise by yourself. Now next exercise is exercise G. It says rewrite the following sentences by changing the words printed in bold to plural forms. जो words bold में लिखे हैं ना उन्हें plural forms में करना है. तो कैसे करेंगे? रोहन wants that pen. तो जब plural हो जाएगा तो बहुत सारे, तो कैसे लिखेंगे exercise G का? रोहन wants those pens. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? that से those बन जाएगा. मीता was looking for this book. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीता was looking for that book. I got this dress from the market. I got these dresses from the market. Such a beautiful picture. तो इसका क्या हो जाएगा? Such beautiful pictures. I don't want this bag. I don't want these bags. ठीक है? So do this exercise also. Now exercise H says rewrite the following sentences by changing the words printed in bold to singular form. वो आपने plural form में किए थे, इनको singular form में करना है. मैं एक बता देती हूँ, आप वैसे ही बाकी कीजिएगा. जैसे I want those bangles, तो मैं कहूँगी I want the bangle, तो single हो गया. I have read those books. I have read that book. ठीक है? तो इसको आप क्या करेंगे? singular form में कर देंगे. So easy, isn't it? Now the exercise I.
Fill in the blanks with the correct options from the brackets. Brackets में जो options दिए उनमें से सही option choose करनी है. Dash garden is so lovely. These garden is so lovely नहीं होगा. This garden is so lovely. This. Dash boys study in my class. Those boys study in my class. Pia has brought dash bag with her. Pia has brought this bag with her. ठीक है? So finished exercise I also. It's an easy one. Now interrogative adjectives. Interrogative adjective is an adjective which asks question. Which asks question. Question पूछता है जो. उसे क्या कहते हैं? Interrogate करना. Question. ठीक है? किसी चीज को interrogate करना. And जैसे मैंने कहा, what animal is that? Whose book is this? तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, इंटेरोगेट कर रही हूँ, तो इट इज एन एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव, व्हाट इज इट? पोजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट शोज पोजेशन और बिलोंगिंग. फॉर एग्जांपल हिज, हर, ये क्या कहता है? इट शोज पोजेशन, शोज पोजेशन, पोजेशन और बिलोंगिंग. ठीक है? तो इट शोज पोजेशन और बिलोंगिंग. तो फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज जे, अंडरलाइन द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द पोजेसिव एडजेक्टिव्स. अंडरलाइन करना है किसको? इंटेरोगेटिव को. फिर से मैं लिख लेती हूँ, देन अगेन आई विल गेट कंफ्यूज्ड. इंटेरोगेटिव को अंडरलाइन करना है और सर्कल किसे करना है? पोजेसिव वाले को करना है. ठीक है? चिल्ड्रन ओपन पेज 15 ऑफ योर इंग्लिश बुक. नाउ हियर इंटेरोगेटिव तो कोई है नहीं, पोजेसिव है, दैट इज योर. ठीक है? पोजेसिव में क्या आ रहा है? योर. तो आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जे, योर. इसको क्या करेंगे आप? सर्कल करेंगे. ठीक है? योर को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे आप. ऐसे ही नेक्स्ट इज हुज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. तो हुज को क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है. My pet is not well. ये क्या है? Possessive. My. सर्कल करेंगे आप. Which insect is crawling on my pencil box? Which क्या है? इसको अंडरलाइन करेंगे because it is an interrogative. My is a possession. So my को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. ठीक है? तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिएगा. Now let's come to the exercise K. Okay, this is very interesting. There is a whole paragraph given. Pick the adjectives in the following story and mention their types. पहले आपने इसमें से adjectives उठाने हैं और फिर बताना है कि वो कौन सा है, possessive है, quantity है, quality है या possession है, क्या है. ठीक है? One day, two merchants named Ram and Sham came to the magnificent court of Akbar. अब two क्या है? two को सर्कल कीजिए. two adjective है. अब वो कौन सा adjective है? वो कौन सा adjective है? adjective of number. number बता रहा है. ठीक है? Came to the magnificent court of Akbar. Magnificent quality बता रहा है, तो वो कौन सा adjective हुआ? adjective of quality. ठीक है? Ram said, Your Majesty, this is my friend. My क्या हुआ? possession. तो वो कौन सा adjective हुआ? possessive adjective. तो उसे सर्कल करेंगे. In a new town. New is again a quality. ठीक है? तो ऐसे करके आपको ये पूरा पैराग्राफ करना है. ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं. Fill in the blanks with adjectives that mean the same as. L एक्सरसाइज का है, उसको हम कैसे करेंगे? एक्सरसाइज L. एक्सरसाइज L. Full of happiness. Okay, कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ आपको अपने आप करने हैं. ठीक है? Full of happiness will be happy. Fine. Number 2 is full of color. Full of color will be colorful. Colorful. Liked by many. Liked by many will be popular. Popular. ठीक है? So ऐसे ही आपने सारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. Without fear, fearless. Made of gold, golden. Full of kindness, kind. Full of doubt, doubtful.
Full of interest, interesting. Without home, homeless. Full of courage, courageous. ठीक है? So please revise these adjectives, different types of adjectives, practice them with the help of your cats so that it is learned by heart and it becomes easier for you people to use them in your sentences and paragraphs. So we'll meet in the next class. Till then, bye.